Hello everyone, welcome to our YouTube channel 21 Academy. Today we are going to discuss about class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. Our today topics are sine convection for the spherical lens, lens formula and the magnification and power of lens. Sine convection for spherical lens, lens formula and magnification and power of lens. So let's start our first topic, sine convection for spherical lens. There are two cases for the concave lens and the convex lens. If we're talking about the concave lens, here F, U and V, all three values are negative. F, U and V, all three values are negative. Here F is a focal length, V is a object distance and U is a image distance. Here focal length is negative, image distance is negative and the object distance is negative. So now come to the convex lens. Here focal length is a positive, image distance is a negative. Here two case of the object distance for the two images, if in case of real image or virtual image. In the case of real image, the value of object distance is positive, and in the case of virtual image, object distance is a negative. So we can conclude that in a convex lens all three values are negative: focal length, object distance and the image distance. But in the case of convex lens, focal length is a positive, object distance in the case of real image is positive, and in the case of virtual image is a negative, and the image distance is a negative. Our lens formula. The lens formula can be expressed as 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F, where U equal to image distance, V equal to object distance and F equal to focal length. The lens formula give relationship between object distance U, image distance V and the focal length F. लेंस फार्मूला को आप एक्सप्रेस करते हैं 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. Here U is a image distance, V is a object distance and F is the focal length, and the lens formula is a relationship between the image distance, object distance and the focal length. Next topic is magnification. The ratio of the height of the image and the height of the object. मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो. मैग्निफिकेशन है वो रेशियो है, अनुपात है हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल एम. मैग्निफिकेशन को आप जिस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे वो है लेटर एम, एंड इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ द इमेज. Here we represent the height of the image by h dash and the height of the object by h. We can also write this formula as m equal to s dash by h equal to v by u. Here positive and negative sign represent the different things. The positive sign show that the image is erect and the virtual. अगर आप फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन देखते हैं तो इसका मतलब जो इमेज की फॉर्मेशन है वो इरेक्ट और वर्चुअल होगी, और नेगेटिव साइन शो दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड द रियल. तो इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी? इन्वर्टेड और रियल. Is a power of lens. Power of lens is the lens as the reciprocal of its length. Power of lens is defined as the reciprocal of its focal length and it is represented by the letter P. Power of lens को letter P से हम represent करते हैं and it is the reciprocal of the focal length. P equal to 1 by F. पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. जो पावर ऑफ लेंस है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, और लेटर पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. पी इक्वल टू 1 बाई एफ इसका फॉर्मूला होता है. द एसआई यूनिट ऑफ ए लेंस इज द डायप्टर. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी. जो इसकी एसआई यूनिट है लेंस ऑफ पावर की, उसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? डी से. कॉन्वेक्स पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ नेगेटिव. अब हम पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो जो पावर ऑफ लेंस है
कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस के केस में वो नेगेटिव होगी।